Good afternoon, everyone. I'm Sonam, your host for today, and I would like to welcome all the staff members and the esteemed directors to the strategic rebanding of Torque Pharmaceuticals. So, can we have a huge round of applause for Torque? Yes, thank you so much. So let us first know about Torque Pharmaceuticals, and for that, I would like to call upon the stage Mr. Amar Iqbal Singh Bedi, Managing Director, Torque Pharmaceuticals. So let's give him a huge round of applause, everybody. Thank you. Hello, good afternoon everyone and welcome. मेरी ड्यूटी लगी है जर्नी ऑफ टॉर्क बताने के लिए। टॉर्क कहाँ से चली, कैसे हुई, कहाँ पहुँची। एक्चुअली टॉर्क इज़ ए ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मिस्टर छतवाल, मिस्टर पीएस छतवाल। ये बात है 1985 की जी। अगस्त में मैंने और छतवाल साहब ने मिलके ये कंपनी शुरू की और आज जहाँ तक पहुँचे हैं ये सब आप लोगों की बदौलत है। मैं मुश्किल इसलिए हो रहा हूँ भी मैंने कभी स्टेज पे बोला ही नहीं है। ठीक है ना, क्यों मनदीप जी? इट इज़ ऑलवेज फर्स्ट टाइम जी। 85 में हमने 693 जो अब हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वहाँ से काम शुरू किया। वहाँ हमने एक छोटा सा लिक्विड सेक्शन लगाया जिसका कि पहला लाइसेंस हमें मिला, जिसकी डेट भी मेरे को याद है, वो थी जी 7 नवंबर 1985। लगे रहे। छतवाल साहब जैसा मैंने ना मेहनती बंदा आज तक देखा ही नहीं है। मेरे गुरु भी वही थे, मेरे फादर भी वही थे। तो उसके बाद 2 साल बाद 1987 में हमने उसी प्रेमिसेस में एक टैबलेट सेक्शन छोटा सा, जिसमें कि आप चाहो तो महीने की 5 से 7 लाख गोली बन सकती होगी, इससे ज़्यादा गोली बन नहीं सकती थी। वो लगा दिया जी। चलते गए, पैसे भी इकट्ठे होते गए। फिर 1990 में हमें किसी ने समझाया भी ये जो इंडस्ट्री होती है ये छोटी छोटी जगह में नहीं होती, ये शहर से बाहर निकलो और कोई ना कोई जगह लो और वहाँ पहुँचो। फिर हमने डेरा बसी जगह ली जी 90 में। ये 2.5 एकड़ जगह थी। हम दोनों बंदे एक दूसरे की मुंह की तरफ देखते थे, यार वो 250 गज का प्लॉट, ये 2.5 एकड़ जगह, हम करेंगे क्या इसका? चितवाल साहब कहते कोई नहीं यार, अगे बिल्डिंग बना लांगे, पिछे ना आप फ्रूट्स के दरख्त ला देंगे। मैं कहा ठीक है जी। ये असली स्टोरी है हमारी। तो 12 अक्टूबर 92 में वो बिल्डिंग बननी शुरू हुई, डेरा बसी वाली, और 94 में वहाँ पहला बिल काटा गया मैक ब्राउन शर्मा जी का, KB शर्मा जी का। तो बड़ा अच्छा काम था, ग्रो भी करते गए, बंदे भी बढ़ते गए। 20 को बंदों से हमने शुरू किया था। और वहाँ एक और मैं ऐड कर दूँ, ये जो कम्युनिटी किचन है ये भी वहीं से शुरू हुई, क्योंकि छतवाल साहब का एक बड़ा था भी यार यहाँ एक छोटी सी किचन होनी चाहिए, एक डाइनिंग हॉल हो जाए जहाँ ये सारे बंदे बैठ के खाना खा लें। तो टोटल मिला के यही 30 के बंदे के आसपास होंगे। तो वहाँ से ये चलते चलते आज कहाँ पहुँची हुई है ये आप सबको पता है। तो वहाँ जब 2002 रेनोवेशन की हमने सारी, तो उधर से शोर डल गया जी भी एक्साइज की पॉलिसी बदल गई है, चलो बद्दी चलो, है जी। 2004 में हमने बद्दी बनानी शुरू की। 2006 से वहाँ हमने प्रोडक्शन शुरू की, बंदे जुड़ते गए, कारवां बनता गया, 20 बंदों के 2000 हो गए, और आज जहाँ हैं वहाँ हम पहुँचे हुए हैं। एंड थैंक यू फॉर द पार्ट ऑफ जर्नी। और मैं प्रे करता हूँ भी टॉर्क जहाँ तक मैं सोचता हूँ उससे भी आगे जाए। थैंक यू।
Thank you, sir. Indeed, it has been a beautiful journey throughout. And a brand is recognized by its logo. And Torque has its own history of logos. So, to discuss more about the histories of logo, now I would like to call upon the stage Mr. Mandeep Chatwal, Executive Director, Torque Pharmaceuticals. Let's have a huge round of applause for him. Thank you. Right. So good afternoon to everyone. First of all, I'd just like to ask you a question. What is a logo? Anyone would like to answer that? What is a logo? बताओ क्या होता है लोगो? हाँ जी प्लीज. Identity. Okay. ठीक है. Anybody else? Yes, please tell me. थोड़ा सा आगे आके बोल दो प्लीज. I can't hear you. ब्रांड दी पहचान. ओके ग्रेट. सो कंपनीज लोगोस क्यों बनाती हैं? यू कैन राइट टॉर्क इन मेनी वेज. लॉट ऑफ पीपल कैन राइट टॉर्क इन मेनी वेज. हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट ये मेरे वाली टॉर्क है या डुप्लीकेट टॉर्क है? दैट इज वाई अ कंपनी अडॉप्ट्स अ लोगो विच बिकम्स इट्स आइडेंटिटी एंड विच बिकम्स इट्स future also. So I would just like to tell you something more about, since here we are at the logo unveiling ceremony, I just want to tell you why there were these logos and why we are changing. Why is it important to change? That was the first logo of the company, which was there I think in 1985 when we started the business. Obviously moving on from there, we went here. Why did we write we care? Did we not care before that? A pharmaceutical company always has to care. Care for whom? Care for the general population, the patients, the society. So it got rebranded from here to a different one, wherein the element of the logo, the two lines, the two black lines were changed to the two red lines to give it a slightly more up. जिसको बोलते हैं ना, red color is very widely recognized at night time. That is why the car's lights are red in color. Why they are not in any other color? Because this color is how the human brain reads it. Moving on from there, we went back to Torque and we had the same logo which kind of was conceptualized at that time. There was a lot of fight between me and my father because I wanted to write since 1985 and he said I will not write since 1985. Now what was the need to write since 1985? You all know and you all have seen that the pharmaceutical industry has grown in India tremendously. Lot of new players have come in, but they have wound up operations because of quality reasons, because of whatever. So what we wanted to show was that Torque is not a fly-by-night operator. Torque ऐसी कंपनी नहीं है कि आज कंपनी लगाई 2 साल काम किया, अगर दवाई फेल हो गई तो हम कंपनी बंद करके चले गए. We tried to capitalize that we are here since the last 40 years. So there is a 40 years of trust which is in the brand, which is in the company, which is in the products and what the company does. So now comes the next question, that we have Torque, we have since 1985. Where do we want to go now? Why a new logo now? Because change is the only constant which is there in life. I'll show you something very interesting. आप सबने दवाइयाँ देखी होंगी. आप सबने ये देखा है क्या है? These colorful, ये जो colorful से मेरे पास पत्ते हैं, ये क्या हैं? These are the new day medicines. This is what I consume. There is no tablet, there is no liquid, but it still gives you drug delivery. So companies have gone from a tablet and a capsule to these films which dissolve in your mouth sublingually. ये कंपनीज गोलियां क्यों नहीं बनाती? ये कंपनी ये क्यों बना रही है? क्योंकि सब गोली बना रहे हैं. This is the future of science. This is the future of how drugs will be delivered to people in the future. So we have to change. If we have to stay relevant in the market, change is very important. आप सब लोगों ने देखा होगा कि in the last couple of years slash months slash years, you can see there are some changes coming. And those changes are being done to ensure that we can stay relevant in the market. तो इसलिए I think you all need to understand that new technologies, new softwares, new circumstances, new working environments will come in. But what it means is there is no मेरे को कभी ना सुनने को मिलता है कि जी यहाँ पर ना कंपनी में इट इज़ ओल्ड वर्सेस न्यू. पुराने लोगों को ये लगता है कि नए लोग आएंगे तो हमारी जॉब चली जाएगी. दैट इज़ नॉट द थिंग. आई सेड इट इज़ नॉट ओल्ड वर्सेस न्यू, इट इज़ ओल्ड प्लस न्यू.
यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, दे हैव डन इट विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ हार्ड वर्क. सी एट द एंड ऑफ द डे अ कंपनी, व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल. तो जितने लोगों ने इकट्ठे टीम वर्क से काम किया है, कोलैबोरेट करके काम किया, तभी आप आगे पहुंचे हैं. एक भी डिपार्टमेंट अगर काम रोक लेता है तो वी कैन नॉट रीच वेयर वी वांट टू रीच, एंड दैट लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ एवरीवन. सो व्हाट माय मैसेज टू यू वुड बी कि सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैबोरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीम वर्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटिंग योर आइडियाज अलाइंड विद ईच अदर, बिकॉज नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू positions in the company, lot of new faces in the company. So it is very important that we all understand why we are here and what are we supposed to do. ठीक है जी? तो and I think following on from that only, with marketing we have sat down and we have designed a campaign known as #BetterTogether. So collaboration, team spirit, and to help each other whenever there is a problem, and to actually grow with each other is the motto which I would say everyone should understand, imbibe, and follow. Thank you very much. Thank you, sir, for beautifully describing the history of logos. And as they say that a logo carries a lot of significance in itself. So now to know the significance of the logo that we are going to unveil today, Since this is I would like to call upon the stage Mr. Abhay Iqbal Singh Bedi, Director, Torque Pharmaceuticals. So let's give him a huge round of applause, everybody. a very good afternoon to one and all. Today, as we stand here, united in celebration, witnessing the unveiling of Torque's new logo, there is a sense of immense gratitude towards all of you, because you have remained committed to the actual meaning of our new logo. The logo reflects all of your constant efforts towards not only bringing in change at every step throughout the journey of success, but also to adapting to changes to keep up with the times. This new symbol is not just a design. It reflects the organization's dedication to constant evolution, innovation, and growth. As you can see, there is an O in the logo, which is moving in an upward direction. What does that mean? That means that, that reflects the ethos, that reflects the commitment of our founding fathers to evolution and innovation and change. And it also aligns perfectly with their vision, which was keep moving forward. No matter what, there were difficulties, there was everything. But they remained committed to one thing, which was their mantra, which remained keep moving forward. And, we need to let this be more than a logo. We need to, let it be somewhat of a pledge to keep advancing, moving ahead, to reach new heights. And together, today, let us make a promise, first to ourselves and then to Torque, to always embrace progress, to innovate tirelessly, and to steer Torque into a future defined by continuous growth. Here's to Torque, to progress, and to the endless possibilities that lie ahead. Thank you. Thank you, one and all. Thank you so much, sir, for the wonderful speech and for describing this new logo beautifully. So everybody, ek baar aur, once again, let's have a huge round of applause for this beautiful new logo that we have here of Torque. So thank you so much for joining here and being a part of this beautiful event. And now we are going to proceed towards the lunch in the dining hall. So thank you so much, everybody. But before that, can we have 3 cheers for Torque? Yes? So on the count of 3, hip hip! Hip hip! Hip hip!
Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you.